going to take place at the Rashtrapati Bhavan forecourt in a few minutes from now, and I'd like to introduce to you the ace reporters of the print, Pragya Koshika, who covers the BJP, and Ruhi Tiwari, who also covers the BJP. So both of you, welcome to this live broadcast. So Ruhi, first of all, tell me, what do you make? We still don't know who the portfolios are, but we know that there are some people have already been called. Smriti Irani, of course, the big giant slayer of this election who defeated Rahul Gandhi in Amethi. But what are your comments? Your first comments. Well, since you talked about Smriti, I think you're right. She has been the giant slayer of this election, and though she had a very, very controversial tenure as minister in the last Modi government, she was shunted out of two key ministries. But it's going to be difficult for the Modi-Shah duo to ignore her this time. She's, after all, defeated Rahul Gandhi in Amethi, so she is likely to be rewarded with a fairly good portfolio. I don't know if she's going to be in the top 4. I doubt that would happen. Okay. But she's... You may have to eat your words. Really. I absolutely may have to eat my words. I always say this. The only two people who know what's happening are Narendra Modi and Amit Shah. We're all second guessing. That's all we are doing. Yes. But she is going to get a good portfolio, because at the end of the day, it's difficult to justify not giving her a good portfolio, considering that you gave it to her the last time and you kept her as union minister for 5 years, though she was a relatively amateur inductee in terms of her administrative and governance. And now that she's had 5 years of experience and she's done so well electorally, they will have to give her a healthy portfolio. Okay, so Pragya, question to you. We all know that, Pragya, you have this daily column in the print called BJP के बीच. तो आप बताइए, आपके सबसे पहले comments. I think portfolios no one knows right now, so no one is even guessing. तो कोई guess भी नहीं कर रहा है कि portfolios क्या हैं. But एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद राजनाथ सिंह लेंगे, फिर अमित शाह लेंगे, फिर नितिन गडकरी लेंगे. तो 4 बड़े नेता ऐसा माना जा रहा है कि ये शपथ लेंगे. सुषमा स्वराज के बारे में बोला जा रहा था कि उन्हें मिनिस्ट्री दी जाएगी. आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने चलाया कि उनको भी कॉल गई है, परंतु चाय पे चर्चा जो प्रधानमंत्री के साथ थी 4:30 बजे पहले थी, परंतु फिर बाद में 5 बजे कर दी गई. उसमें सुषमा स्वराज प्रेजेंट नहीं रही, तो सुषमा स्वराज इज़ लाइक कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस ऑल्सो. पर यहाँ पर एक तरीके से पूरा मंत्रिमंडल है. एक संदेश दिया जाएगा, अपने अलाइज को साथ रखा गया है. जेडीयू के लिए आपको बता दें, जेडीयू ने अभी तक मना किया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, एनडीए में होंगे. उन्हें चाहिए थी 2 सीट, उन्हें दी जा रही थी 1 कैबिनेट बर्थ. तो उन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर मान के 1 कैबिनेट बर्थ को मना किया है कि वो अभी सरकार में शामिल नहीं होंगे. पर ऐसा माना जा रहा है कि कभी ना कभी 5 साल का टेन्योर है, कभी ना कभी प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अकोमोडेट कर लेंगे, बीच में शामिल होंगे. So the big surprise so far is the induction of Jaishankar, S. Jaishankar, the former foreign secretary. If you're watching TV right now, you will see that he is sitting in the front row. We don't know what that means, but the former foreign secretary who retired only a year or so ago and is now back in the Prime Minister's government, we don't know if he's in the cabinet or in the council. Ruhi, that's a big surprise. Yeah, well, we don't really, as you said, we don't know what's happening there, because he's sitting in the front row and that's all the information or feedback we have. But if he indeed is inducted in an important role, that would be a surprise move. But that's true for Modi Shah always. They never cease to surprise. Nobody quite knows what they're going to do next. Right. And as Pragya said, Sushma Swaraj has not been invited, but Jaishankar has. We don't know whether he'll be Minister of State or Foreign Minister. External Affairs Minister would be a big, big jump for a diplomat who just retired a year or so ago. But the other question that I had was that, what does this mean for Ajit Doval, the National Security Advisor? Jyoti, aren't you the better person to answer that question, because you're clearly the one who's following that? No, look, again, it's extremely speculative, and I wouldn't go as far to say that Jaishankar might be inducted as ME. As Pragya rightly said, right, we are not guessing portfolios, or we have no idea about portfolios. I think that's a bit of a premature. But what about Amit Shah? Pragya, ये बताइए कि number 2 तो वो clearly है प्रधानमंत्री के बाद, तो उनके बारे में क्या कहा? आपको याद होगा, हमने जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन भी एक लाइव किया था. आपने पूछा था होम मिनिस्टर, मैंने कहा था डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर. अभी भी ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह को होम मिनिस्टर बरकरार रखेगी. इट्स माई गैस, इट मे कम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर रहेंगे. मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत चैनल चला रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर,
माई बेस्ट गेसेस कुड बी अ डिफेंस मिनिस्टर और मे बी समथिंग एल्स, बट ये श्योर है कि वो मंत्रिमंडल में, हमें तब भी श्योर था कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे और अब भी जैसे साफ हो चुका है, क्योंकि गुजरात की टीम ने उनकी मुबारकबाद उन्हें पहले ही दे दी है कि मोदी, अब ये देखना होगा कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी गवर्नमेंट में क्या कमाल दिखाएगी। अभी तक वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, अब वो गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो कुछ बड़ा चमत्कार ही देश की जनता उनसे चाहेगी। ये 5 साल उनके लिए बहुत ही, लोगों की एस्पिरेशंस बहुत है इस 5 साल से। अच्छा ये बताइए रूही, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस न्यू मोदी गवर्नमेंट? इफ यू टॉक्ड अबाउट सबका साथ सबका विकास एंड देयर वर अदर इश्यूज, बट व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज नाउ? Look, I think, it's very important for the Prime Minister to ensure two things as far as this cabinet is concerned, and I think he would try to do that. One is to ensure that there are enough seasoned faces, enough people who've had administrative experience, because you don't want to waste these 5 years dealing with issues with ministers and inefficiencies in ministries. The first term is different. This time you have to deliver on many counts, and that absolutely has to happen. But on the other hand, Like which counts? What? no, for instance, if it's the home ministry, you have to step up your internal security apparatus, particularly the entire Naxal issue. That is something that, given how tough this government wants to act on all kinds of quote unquote terror, that is going to be an important part, because they will want to ensure that in these 5 years they sort of wrap that issue up entirely and don't leave it for the next government to deal with. Finance is a big issue. Now, how you balance various aspirations and interests, whether it's the corporates and industry, along with ensuring that your welfare initiatives continue the way you've done in the last tenure. Let's not forget that the welfare initiatives have got the BJP another term besides several other factors. So that balancing act will be crucial, and you need a finance minister who not only delivers on that count, but is also able to talk to various stakeholders, talk to state leaders, talk to adversaries in states, in fact, even if it's other parties in power, and bring everybody together to form that cooperative federalism that the Prime Minister has constantly talked of. ये जो कॉर्पोरेट, जी बिल्कुल, ये जो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रही हैं या गवर्नेंस की जो बात करी, इसके अलावा आप क्या? If I might add to this, because this government harped upon, एक बहुत उन्होंने कहा कि उज्ज्वला स्कीम है जिसका बेनिफिट वो रीप कर रहे हैं, महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है, टॉयलेट्स बनाए हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा स्कीम और मुहिम जो मोदी सरकार आते ही चलाएगी, वो है पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था, इनके 100 दिन के प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी ने सब मिनिस्ट्री से मांगे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये एक बिगेस्ट स्कीम होगी जिसको ये 5 साल बाद एनकैश ज़रूर करेंगे, ये इनके सीनियर मिनिस्टर्स का भी कहना है। This is another governance issue. I'm asking you about the politics of the BJP. If Amit Shah moves to the government, which we all know, what happens to the party? He can no longer remain the president of the BJP. But what about, of course, 90% of the country has been painted saffron, but there are still pockets. What happens to those? So, Jyoti, Narendra Modi was Prime Minister for 5 years, but he was a 24-hour politician despite being that. So, really, I don't think these are two people who will stop just because they have administrative or governance responsibilities. They will continue their politics, and Modi has displayed that. Amit Shah was the Home Minister of Gujarat, but he was as active a politician as could have been. So, I don't think these are constraints as far as the party is concerned. Their party responsibilities, their focus on ensuring the party expands its footprint across different regions of the country will continue. What about प्रज्ञा, जो हम कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, नहीं, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये जो विश्वास शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, खास करके अगर हम मुसलमान और दलित कम्युनिटीज़ को देखते हैं, तो जो इसको लेकर जो सरकार है, मोदी सरकार, वो कैसे जो अपने इनिशिएटिव्स है वो कैसे आगे ले जाएगी? ज्योति, वी शुड नॉट फॉरगेट कि प्रधानमंत्री जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो है संघ हमेशा से जातिवाद के खिलाफ रहा है। उन्होंने हमेशा से माना है कि हमारा जाति रहित समाज होना चाहिए, पर रिलीजन एक इशू रहा है और इसी वजह से बहुत अटैक हुए मोदी सरकार पे कि माइनॉरिटी सेफ फील नहीं कर रही हैं। और यही मैसेज था जो मोदी अपनी पहली, जब उन्होंने एमपीज़ को एड्रेस किया, उन्होंने पहली बात यही बोली कि सबका विश्वास हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। जब पॉलिटिक्स की बात आती है, इलेक्शन होता है,
कैसे पार्टी को बेनिफिट कराया जाए वो स्ट्रेटजी अलग होती है। आपको पोलराइजेशन करना है या पोलराइजेशन करेंगे, जहां ज़रूरत है वहां करेंगे, पर गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, और आप किसी भी मंत्री से पूछिएगा, भेदभाव नहीं किया गया था कि कहाँ टॉयलेट बनने हैं, किसको सिलेंडर जाना है, किसको इनकी जो आयुष्मान योजना है किसको वो दिया जाए, वो रिलीजन का आधार नहीं था। जब आपको गवर्नेंस डिलीवर करनी होगी, आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इन्हीं स्कीम्स जब वो भागीदार बनेंगी, समाज, पूरा समाज, एक कम्युनिटी इस स्कीम्स की भागीदार बनेगी, तो सबका विश्वास आप में आएगा। और यही मैसेज था वो जो अपने सांसदों को देना चाहते थे। But having said that, Ruhi, the fact is that the Muslims of India, which constitute 14% of the population, perhaps we still don't know the exact figures and how they, but they did not vote for Narendra Modi. They did not vote for the BJP. What does that mean? Well, really, BJP's DNA has been very clear, Jyoti, and I don't think just because the Prime Minister has said something in his first remarks to MPs, we should expect the BJP's politics to change. The DNA has been of pursuing Hindutva majoritarian politics, and that's what it would be. But as Pragya said, governance is a different ball game, and when you're dispensing schemes or benefits of schemes, then it's completely different. But Would you expect the Prime Minister to do something different, to come out of his skin in a sense, and to also embrace Muslims, which, as Pragya said, is not natural for the RSS? Look, it's a very politically and electorally risky gamble for the BJP, because the BJP has in the last 5 years very, very clearly at least established it that they don't quite care about the Muslim votes. They won the UP elections without fielding a single Muslim candidate. So I don't think they're in that game of trying to, bring everybody together, bring the Muslims together, the cost of annoying their core Hindu vote. But they did field a couple of Muslim candidates in West Bengal, for example. Yes. That's a state where they had to take on Mamata. So it's not as if, so they do it, but a couple of Muslim candidates really, Jyoti, is not a particularly healthy or great figure. But I think the more important thing in this entire cabinet question is how important are cabinet ministers and the ministers, because a lot of, and it's true, we know a lot of ministries in the first Modi government were run straight from the PMO. There were, of course, many powerful ministers like Nitin Gadkari who had their way and who did things the way they wanted to, because they're also seasoned hands. But there were many ministries which were run straight. So how relevant and important are ministers is an important question. Now the question to you, Pragya, is कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य जहाँ पर बीजेपी नहीं जीत के आई है, तमिलनाडु का तो हमको मालूम है कि वहाँ पे डीएमके के कंधों पे कांग्रेस पार्टी जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इन 3 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, इनका जो प्लान है वो सदर्न स्टेट में एक्सपेंशन का प्लान है। कभी भी ये रीजनल पार्टी के कंधों पर चढ़ के सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जब सरकार बनती है तो पुल्स एंड प्रेशर्स रहते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, जो नहीं चाहते हैं। पर अब की बार थोड़ा कुछ अलग हो रहा है। अब की बार इन्होंने सदर्न स्टेट में लार्जर एनडीए का कॉन्सेप्ट लाया है। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें अलाइज की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें अलाइज को साथ रख के चलना ही है। इससे थोड़ी बहुत डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा है स्टेट यूनिट में कि अगर वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे। पर फिर भी अभी तक जो बीजेपी ने सोचा है वो एक लार्जर एनडीए का कॉन्सेप्ट सोचा है, जो कि सदर्न स्टेट में ही एक्सपेंड करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि सुषमा स्वराज ओथ टेकिंग सेरेमनी में पहुंच चुकी हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। ये तो बहुत मेरे ख्याल ये जो आश्चर्यजनक खबर आपने बताई कि सुषमा स्वराज पहुंच चुकी हैं, अब ये नहीं अभी पता चलेगा कि वो शपथ लेती हैं कि नहीं लेती। लेकिन आप दोनों से एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आखिरकार आज रूही शरद पवार से भी मिलने गए और ऐसा लगता है कि वो दैट ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज सल्क एंड वी स्टिल डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट हाउ डज दिस हेल्प द बीजेपी? Well, or doesn't help the BJP? No, so see, surely a weak Congress and the image of the Congress being a completely directionless force, of course, helps the BJP. Rahul Gandhi being party president and not being a popular leader, credible alternative, has helped the BJP in these elections, and this further helps the BJP. The continuing sulk, the fact that the Congress, it's been more than a week, hasn't got its act together, it's still wondering what to do next. There is no course correction that has started. Obviously, it helps its political adversaries. Final comments, Pragya. आई थिंक बीजेपी हमेशा से कहती आई है हमारे स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी। ये स्टैंड उनका मेंटेन रहेगा। इस बात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी, आपको बता दें सोशल मीडिया सेल जो बीजेपी का है वो काफ़ी एक्टिव है।
ये देखने के लिए कि प्रियंका गांधी ने जहाँ जहाँ वो कैंपेनिंग के लिए गई थी क्या वोटर्स को थैंक किया है, हारे या जीते, पर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने, प्रियंका गांधी ने कोई भी थैंक यू का मैसेज, सॉरी वी लॉस्ट बट वील ट्राई अगेन, ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया है. सो एक ये पॉइंट है कि कैसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट गांधी फैमिली में है, इसको कभी भी वोटर्स को बीजेपी भूलने नहीं देगी. वो नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि कभी भी कांग्रेस की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो नहीं भूले वोटर कभी भी. और यही रीज़न है कि बीजेपी हमेशा से मेंटेन कर रही है कि राहुल गांधी को चाहे कितना भी वो बोल दें कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, स्टेप डाउन करना है, वो आखिरकार में प्रेसिडेंट रहेंगे और ये सब इंश्योर करेंगे कि वो प्रेसिडेंट रहें. On this note, we would like to thank all of you, all our viewers, for watching this live broadcast, for watching all the episodes, all the videos that we have done through these elections, especially on counting day. We are very reassured that you believe in the print, that you're reading us and watching our videos. So please send us your suggestions. The video channel of the print